Morning Deepak, Stravani, then Premos, LS Murmu. All of you, very good morning to all of you. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ତାକୁ ଆମେ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିନେବା ତାପରେ ଆଜିର ଯିବା କାନିଜର ରିଆକ୍ସନ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଠିକ୍ ଅଛି। तो aldehyde माने हमें जानिछे RCHO is the functional group, ketone माने RCO RDS, aldehyde रो suffix होची L, prefix होची formyl, ketone रो suffix होची ONE, prefix होची oxo, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करिया द्वारा हमें प्राइमरी अल्कोहल रो aldehyde, सेकेंडरी अल्कोहल रो ketone पाइबा using KMnO4 or acidified K2Cr2O7. Further, by means of catalytic dehydrogenation also we get the aldehyde or ketone. Further, calcium salt of fatty acid under condensation will produce aldehyde or ketone. Rosenmond, under Rosenmond reduction reaction we will get aldehyde. Then cadmium dialkyl cadmium plus acid chloride will give rise to ketone. Further, alkyne will undergo hydrolysis or oxidative hydrolysis in presence of H2O and HgSO4 to produce aldehyde or ketone accordingly. Then from alkene we can get aldehyde or ketone from alkene by means of ozonolysis. From Grignard's reagent, if we react the Grignard's reagent with SCN, that is hydrogen cyanide or methyl nitrile, we will get aldehyde. If we treat with higher nitriles, that is RCN alkyl nitrile, we will get ketone. Next, Itard's reaction, Gajendra Pranam. Itard's reaction, by means of Itard reaction we will get aldehyde from toluene by treating with chromyl chloride and carbon tetrachloride. Further, benzene plus CO plus HCl in presence of AlCl3CuCl produce benzaldehyde. It is the Gattermann-Koch reaction. Further, benzene react with acid chloride to produce ketone, that is your phenyl ketone. Formaldehyde is gas, otherwise others are liquid. Lower aldehydes are more soluble in water, higher aldehydes are less soluble in water. Boiling point of alcohol is more than boiling point of ketone is more than boiling point aldehyde, which is more than boiling point of alkane due to dipole moment factor. Further, HCN, under addition of HCN it will produce corresponding cyanohydrin. Addition of NaHSO3 it will produce corresponding sodium bisulfite. Then Grignard's reagent it will produce an alcohol. Further, hydroxylamine it will produce oxime. Then hydrogen it will produce hydrazone. Phenyl hydrogen it will produce phenyl hydrazone. Semicarbazide it will produce semicarbazone. 2,4 reaction with 2,4-DNPH, that is 2,4-dinitrophenyl hydrogen, it will produce 2,4-dinitrophenyl hydrazone. Then aldol condensation, the aldehydes having alpha hydrogen can condensate in presence of a dilute base to produce aldol as a product. So this is the aldehyde reaction, aldol condensation, and these are the mechanisms of aldol condensation. Now it has been given as homework for you, and you have to identify what are the products in this section. So SCN plus CH3 MgBr in presence of hydrolysis it will give rise to a product. Which one is the product? तो जेतेबेले हमें हाइड्रोजन सियानाइड को CH3 MgBr, that is methyl magnesium bromide से तो ट्रीटमेंट करबा हमें गोटे प्रोडक्ट पाइबा. What is the product here? Acetaldehyde beta hydroxyl aldol. Very good श्रावणी, बहुत सुंदर आंसर. तो एठी आंसर जो देखिबा प्रथमे हमें एसिटाल्डिहाइड पाइबा CH3CHO. मु पिला माने डिटेल्स रा एबे मेकानिज्म करबिनी कहितली. फर्दर CH3CHO undergo aldol condensation to produce CH3COH
then CH2 CH3 CH CH2 OH CH2 CHO. Okay, further this is your propanol. So what is the name of the compound? This is your beta hydroxy aldol, beta hydroxy acetaldehyde aldol, or we can have the name that is your 1 2 3 4 3 hydroxy butanol, butanaldehyde. The name of the compound will be 3 hydroxy butanol. Or beta hydroxy propanaldehyde 3 hydroxy 2 methyl butanol. बा बढ़िया के सुंदर आंसर श्रावणी, बहुत खुशी लगुच जा हो श्रावणी एते सब आंसर करिसंती। अरे कटिगला sorry, by unfortunately it got erased. CS3 पिला माने मु प्रैक्टिस करथिबारु मोर मन अछि, अदरवाइज तुमे प्रैक्टिस करथिले तुमे देखि कि भी आंसर कहि परिबो। लाइक श्रावणी C2H5 then it is CHO, so you will get the propanol here. Propanol will produce propanaldehyde, and further this will be C2H5 then CHOH, further CH2 sorry CH CHO CH3। तो ध्यान देके एटा को प्रैक्टिस करले ही यार आंसर कहि परिबो, अदरवाइज आई थिंक इट इज नॉट सो इजी टू आंसर द क्वेश्चंस। तो आल्डिहाइड कंडेंसेशन जो माने लास्ट क्लास पढ़िथिले से माने ही कहि परिबो। बा नेक्स्ट आंसर भी कहि दिलेनी श्रावणी, बहुत सुंदर। तो ये ए कंपाउंड रो नेम हबो, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? 1 2 3 4 5। सो 2 hydroxy 3 hydroxy 2 methyl 3 hydroxy 2 methyl 1 2 3 5 pentanol. Name of the compound will be 3 hydroxy 2 methyl pentanol. श्रावणी ए क्वेश्चन रा नेमिंग टा तुमरो भूल अछि। फर्दर C3H7 COCl या को जेतले हमें रोजेनमॉन्ड रिडक्शन रिएक्शन करबा हमें पाइबा CH3 CHO सॉरी C3H7 CHO दैट इज ब्यूटानॉल पाइबा। ब्यूटानॉल को अल्डोल कंडेंसेशन कले हमें कोन पाइबा? C3H7 CHOH देन CH CHO, फर्दर एठी आस जीवो तुमरो C2H5। सो name of the compound will be a compound रो नेम आस जीवो तुमरो butanaldehyde 3 hydroxy 2 methyl hexanol। देखि नबा आंसर कोन हबो? 1 2 3 4। यार आंसर 3 नंबर आंसर हबो 3 hydroxy 3 hydroxy then 2 ethyl, मन रखो 2 ethyl, and further it is 1 2 3 4 5 6 right 1 2 3 4 5 6 hexanol. So this is the name of the compound 3 hydroxy 2 ethyl hexanol. Okay, next question answer कौन होगा? 4 नंबर। What are the reactants? इथाइल, इथाइल कौन होगा नेम? मु एक्चुअली जो पिला क्लास करछे से पिला माने टोटली आसुना देबे, आगो आसथिले एबे जमा आसुना दे। सेकंड आंसर टा एसिटाल्डिहाइड। यस, दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड आसीबो। एसिटाल्डिहाइड को जेतेबेला में
डिस्टिलेशन करिवा आमे कोन पाइबा सॉरी कंडेंसेशन करिवा इट विल अंडरगो दिस condensation to produce the 3 hydroxy butanol as product acetaldehyde को कले फर्दर कहा को ड्राई डिस्टिलेशन कले हबो हमरो CH3CHO पाइबा so upon dry distillation CH3COO CH3COO Ca that is calcium acetate plus calcium formate Ca calcium acetate plus बास मु खोजुतिली कुश कुआडे गले कुश लव कुश कुआडे गले निकी कुआडे गले जो माने रेगुलर स्टूडेंट आउ ए वर्ष एग्जाम देबे से माने सब कुआडे गले पिले माने आ बहुत कम क्लास अछि ए चैप्टर सर जीवा पय मु जा देखतिली आ बहुत कम दिन रे चैप्टर सरी जीवो आ ए चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट सेथिबे मु बहुत याको प्रैक्टिस करै छी so this is calcium acetate and calcium formate sorry this is H calcium acetate calcium formate अच्छा ठीक अछि but you are not responding the answers answer भी कहवा को पड़िबो जो माने भी क्लास रे अछ से माने आंसर कहले मु जानिउ ना तुम माने क्लास रे अछ बोली हाउ कैन आई नो दैट यू आर इन क्लास फर्दर दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड एडा होछि तुमरो इटार्स रिएक्शन प्ले माने तुमे जदी रेगुलर क्लास करूथिबो मन रख ऑर्गेनिक ए वर्ष ऑर्गेनिक रे तुमे माने मिनिमम मु गारंटेड दे की कहूची मिनिमम आल्डेहाइड कीटोन रु पाखापाखी आसीबो 20% क्वेश्चन ए चैप्टर रु आसीबो माने पाखापाखी 10 रु somehow 20% 70 रो 20% माने 15 मार्क 15 रु 20 मार्क तुमे आल्डेहाइड कीटोन रु पाइबो थ्रू आउट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जहां भी देखिबो ठीक अछि ताले एटी प्रोडक्ट आसीबो व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर बेंजाल्डिहाइड को जेतबेला हमें CH3 MgBr सहित ट्रीटमेंट करबा हमें कोन पाइबा सो दिस इज COH नमस्ते सर गुड मॉर्निंग त्रिशा सर 6 नंबर क्वेश्चन टा अधारे रहि जाइथिला अधारे अच्छा रहि जाइथिला गतकाली अच्छा बाय मिस्टेकली गतकाली करंट चली गला सिथपई ए भला इशू आछी मु कंप्लेन लॉन्च करछि बीएसएनएल ऑफिस रे से माने कहि छंती ऊपर जे थरो करंट गले हबनी बोली कि से अनुसार से माने सेटअप चाली छी आगो हो नथले बे किस दिन हला करंट चली गले भले आउछ so name of the compound will be here a compound ro na kon asibo this is your 2-phenyl ethanol name of the compound will be 2-phenyl ethanol sorry 1-phenyl ethanol 1-phenyl ethanol ए कंपाउंड रो नाटा ए भले हबो 1 नंबर 2 नंबर ए भले नेमिंग दिया जिवो 1 नंबर फिनाइल ग्रुप रहिछि 1-phenyl ethanol ठीक अछि फर्दर कहा को NH2NH2 हाइड्रोजन सहित ट्रीटमेंट कले हमें ए भले गोटे कंपाउंड पाइबा बेसिकली it will be your CHO benzaldehyde plus H2NNH2 H2NNH2 that is hydrogen हाइड्रोजन सहित ट्रीटमेंट कले हमें हाइड्रोजन पाइबा हाइड्रोजन पाइबा ओके फर्दर या को कहा से तो ट्रीट माने इनिशियल रिएक्टेंट कोन हबा ओटा को प्रकार रिएक्शन के कोइ परिबो व्हाट इज द इनिशियल रिएक्टेंट इन दिस केस एंड which type of reaction is it
गेटरमैन कोच रिएक्शन, वेरी गुड श्रावणी एंड लवकुश, बहुत बढ़िया आंसर, गेटरमैन कोच रिएक्शन। इनिशियल रिएक्टेंट कौन हम? बेंजीन प्लस सीओ प्लस एसीएल, वेरी गुड श्रावणी, बहुत बढ़िया। सो बेंजीन प्लस सीओ प्लस एसीएल, बेंजीन ए रिएक्शन रो ना होची गेटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम जिबा कैनिजोरो रिएक्शन। पिला माने आल्डल कंडेंसेशन पई कंडीशन थिला जे जे कि तुमरो अल्फा हाइड्रोजन रहितबा दरकार। देखो अल्फा हाइड्रोजन रहितबा दरकार, से ही तुमरो आल्डल कंडेंसेशन जिवो। वर्तमान कैनिजोरो पई कंडीशन आसी गला जे सी तुमरो एटा आसी सी नंबर रिएक्शन ना, ए देन थिला तुमरो एटा सी नंबर, एटा डी नंबर, दिस इज योर नंबर, दैट इज योर डी नंबर रिएक्शन। टोटल चारिटा कैटेगरी रिएक्शन वर्तमान आम देखीचे। प्रथम एडिशन रिएक्शन, सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तापरटा आसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर, थर्ड आसी आल्डल कंडेंसेशन, फोर्थ वन इज कैनिजोरो रिएक्शन। कैनिजोरो रिएक्शन रेडी कंडीशन आछि सर सबुठु आल्डल कंडेंसेशन रे मजा आसला। ये श्रावणी आल्डल कंडेंसेशन इज वेरी मच क्वाइट इंटरेस्टिंग। आ जदि तुमे न बुझी परिवो आल्डल कंडेंसेशन टोटली करि परिवो नाही, आ प्रैक्टिस कले ही आल्डल कंडेंसेशन हे परिवो, अदरवाइज हे परिवो नाही। जणी जदि देखि देखि पळे आसीबो हबनी। प्रेमोस लवकुश कहले बेंजीन, प्रेमोस लवकुश भी आंसर करथला। अच्छा, कैनिजोरो रिएक्शन रे हमें लिखि परिबा दैट कैनिजोरो रिएक्शन को माने दबो, व्हिच विल गिव कैनिजोरो रिएक्शन ना, एटा अल्डिहाइड इन दबो। ठीक अछि, रिमेंबर अल्डिहाइड विल अंडरगो कैनिजोरो रिएक्शन, बट व्हाट इज द कंडीशन? अल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कंडीशन अप्लाई हो गला नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन रहिबा को हबनी, माने जोटा आल्डल कंडेंसेशन दबनी सी कैनिजोरो दब, जी आल्डल कंडेंसेशन दब सी कैनिजोरो दब ना, बुझीगला। सो aldehydes having no alpha hydrogen atom, no alpha hydrogen atom undergo self oxidation, undergo self oxidation, सेल्फ ऑक्सीडेशन, एटा गोटे टाइप रो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी। ठीक अछि, काहे कि ऑक्सीडेशन हमें आगु पढ़िबा। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सॉरी अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुए रिडक्शन भी हुए। सो सेल्फ रिडक्स कहि परिबा भी, सेल्फ रिडक्स जोटा को कहा जाए डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, जोटा को कहा जाए डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। माने आमे रिडक्स जोटी तुमरो गोटी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस रिडक्स रिएक्शन जीव सेठी आमे कहबा डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड अल्काली। सेठी थिला तुमरो डाइल्यूट अल्काली, एठी किंतु रहइबो कंसंट्रेटेड अल्काली। एठी मन रखो, एठी कंसंट्रेटेड अल्काली। ठीक अछि, aldehydes having no alpha hydrogen atom undergo self oxidation reduction reaction with concentration alkali to produce an alcohol and a sodium salt of carboxylic acid. Carboxylic acids.
तो आम प्रथम रिएक्शन कौन देखी नवा रिएक्शन प्रथम आम देखी नवा और रिएक्शन टा मन रखा केमती तापाई मेकानिजम भी पिला माने अच्छी मेकानिजम भी बुझेबा। अच्छा आल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन ताहले जहार अल्फा हाइड्रोजन नथिबो अल्फा हाइड्रोजन नथिबो माने CHHCOH देखो तुम्हें एटी अल्फा कार्बन ही नहीं सो हाउ कैन यू फाइंड द अल्फा हाइड्रोजन दिस इज योर HCHO सो इटा हबो तुमरो नांडा हबो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड दिस विल बी फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड को जेतेबेले आमे कंसंट्रेटेड NaOH दुईटा मॉलिक्यूल नबा कंसंट्रेटेड NaOH रो प्रेजेंस रे ट्रीटमेंट करबा एठी ये रिएक्टिंग मटेरियल भी कंसंट्रेटेड NaOH होची रिएक्टिंग मटेरियल भी ताले एठी आमे दुईटा जिंस पाइबा गोटी साइड रे अल्कोहल पाइबा गोटी साइड रे करेस्पोंडिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पाइबा। मन रख एठी जहा कार्बन थिबो प्रोडक्ट रे भी सेतिकी कार्बन कार्बन आसीबो माने एठी गोटी कार्बन थिले प्रोडक्ट रे दीटा गोटी साइड रे गोटे कार्बन रहइबो आउट साइड रे आउ गोटी ही कार्बन रहइबो दीटा आसीबो नाही। किंतु आल्डल कंडेंसेशन रे जदि हम देखिबा आल्डल कंडेंसेशन रे हम देखि पारथिले जे जहा भी हमर प्रोडक्ट थिला ठीक अछि जहा भी हमर इनिशियल रिएक्टेंट थिला तार दी गुणा कार्बन रहिछि प्रोडक्ट रे तार दी गुणा कार्बन रही मन रख या बेस कर भी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसी पारे। सो आमर आल्डल कंडेंसेशन रे जहा रही इनिशियल नंबर ऑफ कार्बन तार 2 टाइम्स कार्बन रही इन आल्डल व्हेरेस इन कैनेजर प्रोडक्ट बा अल्कोहल रे यार जेतरा आल्डिहाइड जेतरा कार्बन रही थो एई आल्डिहाइड रे सेतरा ही कार्बन रहिबो एई की अल्कोहल रे प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड रे। तो आम देखी नवा प्रथम अल्कोहल HCH एज यूजुअल जेम सिंधी लिखिदेल ठीक अच्छे। तो ये जो डबल बॉन्ड O थिला गोटे साइड OH हो गोटे साइड H हो सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3OH दिस द ट्रिक पिला माने एटा ट्रिकटा केमदे मन रखियो जेंदे आल्डल रो ट्रिक थिला एटा ट्रिक यार रिएक्शन मेकानिजम अलगा अछि मु बतेबी। सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी मिथानॉल एटा बुझी पालो केमदे लिखिबो आउ गोटे कौन आसला HCH ठीक अच्छे HCH तो ये कौन हम HCH जो थिला ये भूल हो गला मोर गोटे मिनिट ये भूल हो गला टिके भूल हो गला दैट HC डबल बॉन्ड O एज यूजुअल लिखियो सेठी सिंगल बॉन्ड रहइबो एठी डबल बॉन्ड O एठी किंतु OH बदल रे ONA HCONA सो या ना कौन हम व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड सोडियम फॉर्मेट बुझी पारला पिला माने डिड यू अंडरस्टैंड। सो गोटे आसीबो मिथानॉल आउट आसीबो सोडियम फॉर्मेट ठीक अछि। ताले जदि हमें यार मेकानिजम को जीवा व्हाट इज द मेकानिजम बिहाइंड दिस मु मेकानिजम करिवार मेन रीजन आसिला जे तुमे माने परवर्ती मुहूर्त रे बाय मिस्टेकली जदि प्रोडक्ट आनिबा को भूली गला बा ट्रिकटा भूली गला ताले किंतु तुम्हें प्रोडक्ट किंतु आनीदेव जदि मेकानिजम तुम मन अच्छी मेकानिजम जदि मन अच्छी प्रोडक्ट आनीदेव बट मेकानिजम आमर एग्जाम दरकार ना बोर्ड CHSE बोर्ड दरकार ना। फास्ट वन स्टेप 1 रही मेकानिजम रे सेटा जमी 3टा स्टेप ये भी स्टेप 3टा स्टेप रही ओके। स्टेप 1 रे रही न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH minus ion to the electron deficient carbon सेठी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करथिला किंतु सेठी कार्बन सेठी तुमरो अल्फा हाइड्रोजन को आग बाहर करथिला काहे पिला माने अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करथिला कारण अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक किंतु एठी कौन हम ना HCHO थिला सपोज एटा हमें एग्जांपल HCHO ही नहीं की करबा प्लस OH माइनस जोटा कि NaOH रो आसला NaOH कैन बी आयोनाइज्ड टू गिव राइज टू Na प्लस एंड OH माइनस। तो तुम्हें पचारियो सर हमें डाइल्यूट एठी नहीं थिले ही न थांता कि डाइल्यूट नेले पिला माने OH माइनस रो कंसंट्रेशन कमी जिवो आ OH माइनस रो कंसंट्रेशन जेते अधिक आसीबो बेसिसिटी सेते अधिक आसीबो बेसिसिटी जेते अधिक आसीबो से कोन कर परिबो रिएक्ट कर परिबो को पाखरे
ना एई तुमर कार्बन जोटा कि तुमर पोलाराइज्ड कार्बन को रिएक्ट कर परिबो एठी साधारणतः OH माइनस सहजरे अटैक कर परिबो नाही किंतु जदि एटा स्ट्रांग बेस थिबो जदि यार मीडियम टा बहुत स्ट्रांग बेस थिबो माने कंसंट्रेटेड थिबो तेबे जाय कि OH माइनस अटैक कर परिबो जदि एटा डाइल्यूट थिबो ए जगह रे अटैक कर परिबो नाही कारण कार्बन रो ए जो पोलराइजेशन परे जो क्रिएट होची चार्ज से चार्ज अनुसार यार साल्वेशन एनर्जी अधिक न थाए सो ये हो पार ना बुझीगला ना कहीं तुम्हें कनसेंट्रेटेड नेल कहीं आम डाइल्यूट नेले कहीं हम ना व्हाई इट हैपेंस सो फर्दर आम जो देखा HCO माइनस HOH तो H टा मु तले लिखिदेली OH टा ऊपर रखिदेली ओके HCO HOH सो ये आसीगला तुम प्रोडक्ट बा तुम्हें OH टा जदि तले रखा चाहो यूजुअल रख H टा जेम थिला रख सो दिस इज योर करेस्पोंडिंग आयन गोटे आसीगला दैट इज योर ऑक्सीजन आयन ऑक्सीजन ऊपर गोटे आयन पळे आसला ठीक अछि वी कैन नॉट से व्हाट इज व्हिच टाइप ऑफ आयन इज इट एको हमें पर्टिकुलरली वर्तमान कहि परिबा ना ठीक अछि नेक्स्ट आछि transfer of hydride from intermediate to transfer of hydride जोठी की अलगा हो गला सेठी तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन आगे आसला अल्फा हाइड्रोजन हैला पर न्यूक्लियोफाइल हैला न्यूक्लियोफाइल रा जाई कि तुम्हारा डायरेक्ट कार्बोनिल सहित अटैक करथला किंतु एठी तुम्हारा गोटे O- जनरेट हैला पर ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड फ्रॉम इंटरमीडिएट to another aldehyde आउ गोटे aldehyde पाखु जो aldehyde हमर अछि ता पाखु को कोन हला ट्रांसफर हला सो हाउ इट लुक लाइक्स दिस इज योर HCOA माइनस फर्दर दिस इज OH जिन जिन तळे OH थिला से भले लिखि दियो OH बॉन्ड H प्लस HC डबल बॉन्ड OH बुझीला या सहित एज यूजुअल फॉर्माल्डिहाइड हमें रखिदेले ए जो थिला तुमरो करेस्पोंडिंग जो इंटरमीडिएट आसला ए भले रहिला हेले वर्तमान कोन हबो O माइनस ऑफ कार्बन भितरे जदि हम देखिबा माइनस चार्ज ता एते समय रहि परिबो नाही सो माइनस चार्ज ता रहि परिबोनी किंतु ताकू एठी के आसीबा गोले किए गोटे थिबार अछि जे कि डिस्प्लेस करबो सो एठी तुमरो C माइनस हबो एठी O माइनस एठी प्लस हबो डेल्टा माइनस एठी डेल्टा प्लस हबो चार्ज क्रिएट हबो सो देयर विल बी डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस बर्तन डेल्टा प्लस हेले एठी गोटे कार्बन रे किए गोटे माइनस चार्ज थिबा वाला सब्सटेंस आसीबा दरकार तो माइनस चार्ज O माइनस ऐड कर देले एठी भूल हे जिवो पिला माने भूल रे भी जदी एटा अटैक कर दबो इट विल बी रॉन्ग एटा एक्चुअली प्रोसेस नो तुम कहबो काहे सर एटा O माइनस एटी के अटैक करि परियो नाही कारण OCO माइनस दिस इज हाईली अनस्टेबल ए कंपाउंड टा अनस्टेबल रहइबो फर्दर ठीक अछि OCO माइनस ए भला कंपाउंड अनस्टेबल रहइबो एट रूम टेम्परेचर ठीक अछि सेति पय एटा हबो नाही ताले तुम कहबो ताले कोन हबो ताले हाइड्राइड टा ट्रांसफर हबो ए केस रे हाइड्राइड केमदी रहइबो ना एठी तुमे जो देखुछ H माइनस सबोले आमे जानू जे H प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नै कि पळाए किंतु एटे इलेक्ट्रॉन देई कि पळाए सबोले देखिचे आमे जेबे भी जेते सब रिएक्शन देखिचे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देई कि जाए कार्बन को किंतु एठी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नै कि आसे ठीक अछि स्ट्रांग बेस रो प्रेजेंस रे ए जिंस होई परिबो तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं कि आसीबा जगु एटा हाइड्राइड आयन हे जिवो H माइनस आयन हे जिवा जगु ये कोठी अटैक कर परिबो दिस कैन अटैक एट द कार्बन दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ताले एई कार्बन रे तुम्हारा चार्ज क्रिएट हे जिवो देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो व्हिच इज फर्दर न्यूट्रलाइज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द माइनस चार्ज अकॉर्डिंगली ताले आसीबो कोन प्रोडक्ट the product will be your HC double bond O OH ठीक अछि HC double bond O OH एटा गोटा आसी गला प्लस
HCO माइनस H बुझीला CH3O माइनस गोटे जगह आसला आ गोटे जगह फॉर्मिक एसिड आसला. So we got two products, one is formic acid and another is CH3O minus. वर्तमान आमर NaOH रु OH minus तो रिएक्ट करियोला तुम माने देखिछ OH minus थ्रू आउट द रिएक्शन रिएक्ट करियोला किंतु आमर बळका रहियोला कि Na+ आमर बळका रहियोला. सो एई Na+ टा वर्तमान कोन हबो रिएक्ट करिवा को लागिवो. Na+ टा का सहित रिएक्ट करिवा जोडा स्टेप 3 हबो. सो इन स्टेप 3 रे कोन हबो ना लिखिबा जे एठी हाइड्राइड H+ ट्रांसफर हबो प्रथमे. सो जदि हम देखिबा सिंस ए दिटा कंपाउंड भितरे HCOH आ CH3O माइनस भितरे कोन हबो एठी ना एठी प्रोटॉन ट्रांसफर हबो. सेठी हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होइथिला एठी प्रोटॉन ट्रांसफर हबो. सो एठी सिंस हमें जो देखिबा सिंस your formic acid that is HCOO minus is more stable than HCOH formic acid, the H+ will be transferred, the H+ ion will be transferred. So it हूँ तुम हाइड्रोजेन आयन दैट इज योर प्रोटोनेशन कहि परिबा हमें ए स्टेप को भी कहि परिबा हमें प्रोटोनेशन. सेटा हाइड्राइड ट्रांसफर हैला एठी प्रोटॉन ट्रांसफर ए रिएक्शन को हमें भी कहि परिबा प्रोटॉन ट्रांसफर भी कहि परिबा शॉर्ट फॉर्म रे. तो सिंस HCO minus is more stable than HCOH, the H+ ion will be shifted towards CH3O minus ion. CH3O minus ion आडको शिफ्ट हो कौन हला कुआगला एठी बुझिबा डिटेल्स रे ना HCOOH थिला जोडा हमर फॉर्म हेतिला आ गोटे कौन फॉर्म हेतिला HCO minus CH3O minus फॉर्म हेतिला. तो ए दि जणक भितरे आमे जदी ये देखिबा HCOH पर्टिकुलरली फॉर्मिक एसिड जनरली तुमरो सहजरे आयोनाइज हेजिवो कि CO एडी कोन हबना C डबल बॉन्ड O माइनस फॉर्म करनो. ठीक अछि प्लस H+ दे दबो तो इटा सहजरे फॉर्म हेजिवो बहुत जल्दी इटा फॉर्म हेजिवो. तो फॉर्मिक एसिड बहुत जल्दी तुमरो फॉर्मेट आयन आ H+ दे दो. तुम कहबो सर काहे की फॉर्मेट आयन देला. अच्छा जदी दे देला ताले एडा काहे की प्रोडक्ट हला एडा स्टेबल केम देला फॉर्मिक एसिड लेस स्टेबल केम देला ना पिला माने तुमे जदी देखिबो एठी माइनस चार्ज ता डिस्प्लेस हला फर्दर ये एठी ऊपर को डिस्प्लेस हला जा द्वारा HCO माइनस डबल बॉन्ड O ही गला. तो एठी पुनी आउथरे डिस्प्लेस हबो तळको पुनी एई O ता ऊपर को डिस्प्लेस हबो. सो फर्दर आमे ए भलिया दुईटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाइले आउ ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रे प्रत्येक एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रत्येक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रे सी रो कौन कौन कैरेक्टर रहला ना O माइनस कैरेक्टर रहला एज यूजुअल डबल बॉन्ड O कैरेक्टर रहला. तो प्रत्येक रे O माइनस आउ डबल बॉन्ड O रहिला तो सिमिलर रहिला प्रत्येक दीज आर कंप्लीटली कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर रहिला. किंतु जदि हमें कहबा फॉर्मिक एसिड कथा फॉर्मिक एसिड रे सब गुडाक कैनोनिकल आसुनी. तो तुम कहबो सर फॉर्मिक एसिड भी रेजोनेंस शो करछि के मना करछि होनी. हां हबो देखिबा तो एठी O माइनस एठी जो लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इट विल बी ट्रांसफर्ड. सो हमें कोन पाइबा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गुडाक दैट HCO माइनस OH डबल बॉन्ड एठी ऑक्सीजन रे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हे गला. तो तुमे देखि पारछो जे गोटे साइड रे ऑक्सीजन रे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हला आ गोटे साइड रे ऑक्सीजन रे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हला. फर्दर ये कोन हबो पुनी औथरे न्यूट्रलाइज हबारु हबा पई एटा एठी की शिफ्ट हबो एटा एठी की शिफ्ट हबो जा द्वारा पुनी हमें प्रथमटा पाई परिबा. तो एठी हमें जदी देखिबा एठी दी प्रकार
कैनोनिकल फॉर्म्स आसिला गोटे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रे कोन हेची ना सी रो डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH कैरेक्टर रहिला बेले आउ गोटे साइड रे सी रो O माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस कैरेक्टर रहिछि तो अलगा अलगा रहि जाउछि किंतु एडे COO माइनस प्रत्येक जगह रे CO माइनस अछि किंतु एडी अलगा अलगा कैरेक्टर हि जाउछि सेतनै इट इज वीक और इट इज लेस स्टेबल रेजोनेंस देखेले भी इट इज लेस स्टेबल बट SCO माइनस इज मोर स्टेबल सेति पई SCO माइनस टा जल्दी कोन हबो प्रोटॉन रे कन्वर्ट हिजिवो सो H will be converted into proton very easily बुझी पारला समझते how SCOH is converted into SCO minus that is your format ion more easily and how it is more stable than how the format ion is more stable than formic acid did you understand बुझी पारला समझते तो एठी तुम्हारा HOH जो थिला या को मु चेंज कर देबी that this will be O single bond H ओके बहुत इंपोर्टेंट ए जिंस गुडा को संपूर्ण भाव में बुझिबा तो एठी प्रोटॉन लॉस हबो सिंपली एठी प्रोटॉन लॉस हबा द्वारा एठी कोन हबो ए भलिया HCO माइनस फॉर्म हबो आउ ए जो प्रोटॉन H प्लस फॉर्म हला ए H प्लस को तुमरो करेस्पोंडिंग O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो O minus will donate the electron towards this proton जो प्रोटॉन टा लॉस हे गला ताकू के O minus इलेक्ट्रॉन डोनेट करनबा ताला हमें देखिनबा प्रोडक्ट कोन कोन आसुची हमरो मेकानिज्म समस्त मन रखिवा निहाती दरकार नै केवल बुझितिबा निहाती दरकार जे मेकानिज्म टा को भलिया होय सो H C डबल बॉन्ड O फर्दर एठी कोन आसीबो O माइनस गोटे साइड आसीबो आ गोटे साइड कोन आसीबो H C H H O माइनस एटी तो हबनी आ OH हेजिवो एटा OH हेजिवो सो ए कंपाउंड हेजिवो दिस इज इक्वल टू योर CH3OH दैट इज मिथानॉल CH3OH पळासला अच्छा एडी HCO माइनस जो रहिछि आम पाखरे गोटिए केटायन बळका थिला मु कहउथिली सेई केटायनटा होछि Na+ सो से Na+ सहित रिएक्शन करबा को लागिवो कि SCO माइनस Na+ सहित रिएक्ट करिके प्रोडक्ट कोन दबो HCOONA दैट इज सोडियम फॉर्मेट सो गोटिए प्रोडक्ट आसीबो सोडियम फॉर्मेट आ गोटिए प्रोडक्ट आसीबो मिथानॉल सो हमें एठी दुईटा प्रोडक्ट पाइले सोडियम फॉर्मेट प्लस मिथानॉल we got two products so name of the compound will be methanol and name of the compound will be sodium formate पिले माने बुझी पारला समझते याकू रिएक्शन मेकानिज्म करबा द्वारा जदि कौनसी जगह रे एंट्रेंस रे हमर बोर्ड कथा कहनी एंट्रेंस रे कारण मु आल्डिहाइड कीटोन रो जहा भी पढेछि वर्तमान जहा सेक्शन पढे देछि सब गुडा को एंट्रेंस ओरिएंटेड रहिछि पिला माने तुमे जदि एथिकी पढी देलो आल्डिहाइड कीटोन रिलेटेड एंट्रेंस टॉपिक भी कवर हे जिवो डोंट वरी आउ एक्स्ट्रा टॉपिक किछि रहउनी जोठे कवर न होइतिबो हां दरकार पड़ले गोटे दीटा रिएक्शन मु कर न थाई पारे किनु मैक्सिमम पार्ट एंट्रेंस रो भी कवर हे जाउछि ठीक अछि इंक्लूडिंग CHSE also सो हमें देखिबा एबे आउ गोटे कंपाउंड दैट इज योर बेंजाल्डिहाइड तुमे माने जदि लक्ष्य करिवो बेंजाल्डिहाइड रे भी अल्फा हाइड्रोजन नाही अल्फा कार्बन अछि सत किंतु अल्फा हाइड्रोजन नाही तुमे कहबो केमदी ना एठी जदि हम देखिबा पिला माने सब जगह रे 6टा हाइड्रोजन थाए बेंजीन रो सब जगह रे 6टा हाइड्रोजन थाए किंतु एठी 6टा हाइड्रोजन एठी गोटे CHO ग्रुप रहि जाय से हाइड्रोजन बदल रे सो एठी नो अल्फा हाइड्रोजन एठी अल्फा हाइड्रोजन नाही सो ये this will react with concentrated NaOH to produce two compounds what are the products here एठी कोन प्रोडक्ट आसीबो को वर्तमान ही तुमे को कोन प्रोडक्ट आसीबो मु ऑलरेडी ट्रिक कहि सारिछि समस्त को आई हैव सेड यू द ट्रिक तो एटा CHO को हमें टिके चेंज कर देबा मॉडिफाई कर देबा C डबल बॉन्ड OH नहले हमको सॉल्व करला बेले बा रिएक्शन करिवारे असुविधा हो C डबल बॉन्ड OH सो जदि हम देखिबा
एटी HCOH concentrated NaOH नेले CHCH लिखिदेली तले H ऊपर OH दे देथिली तापर केस रे कोन लिखिली ना HC लेफ्ट साइड जिमसिम अछि ओ ऊपरडा भी जिमसिम अछि राइट साइड रे H बदल रे ONA पड़थिला तो गोटे साइड रे कोन पड़थिला ONA पड़थिला राइट साइड रे आउट साइड रे कोन पड़थिला HOH पड़थिला ठीक अछि सो इटी कोन आसीबो प्रोडक्ट हियर इटी प्रोडक्ट कोन आसीबो के कहि परिबो हु कैन से व्हाट आर द प्रोडक्ट्स सा बेंजाइल क्लोराइड एंड सोडियम बेंजोएट वेरी गुड शुभम बहुत सुंदर आंसर दिचंदी पिला माने केमदी करबा ट्रिक आपने की दिस इज योर बेंजीन फर्दर सी एज यूजुअल जिमसिन लिखियो कहतली एडी प्रथमडारे ओ लिखिबो तापरडारे एच लिखिबो प्रथमडारे डबल बॉन्ड दबो नाही जा द्वारा एडी ऊपर OH तळे H रहिबो ठीक अछि ए भले आसी गला प्रथम प्रोडक्ट सेकंड रे कोन करिवो सेकंड रे किंतु बेंजीन नेलो सी नबो बेंजीन फर्दर सी सेकंड रे किंतु डबल बॉन्ड O दबो H बदल रे ONA लिखि दबो H बदल रे ONA लिखि दबो तुमी यार मेकानिज्म चाहिले करि पारो न भी करि पारो मेकानिज्म जदी केही करूचो मते नेक्स्ट क्लास रे तुमे चाहि पचारि भी कहि परिबो पचारि भी परिबो कोन से जगह रे डाउट थिले अदरवाइज मु नेक्स्ट क्लास रे मेकानिज्म करि देबी जो तुमरो दरकार भी रहिछि तो एई कंपाउंड रो नेम कोन हबो बेंजानॉल बेंजानॉल very good name of the compound will be benjanol or benzyl alcohol मु आउ गोटे कंपाउंड भी देबी प्लस बेंजाइल क्लोराइड नो बेंजाइल क्लोराइड नो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल एंड ए कंपाउंड रो ना हबो सोडियम बेंजोएट so benzoic acid react with concentrated NaOH to produce these products गोटे भूल हो जाए होमवर्क सेक्शन रे नहीं नहीं ठीक अच्छे यस ठीक अच्छे भूल है कि भाविले ये दे दी बोले ठीक अच्छे देयर इज नो रॉन्ग नेक्स्ट आउ किछि होमवर्क मु कहि दोछि आउ किछि होमवर्क मु दोछि तुमे माने प्रैक्टिस करिवो ताकू एभला क्वेश्चन पाइबोनी पिले माने सो प्रैक्टिस करिनियो CH3 CHO so this is your 2,2-dimethyl propanol react with concentrated NaOH to produce two products what are the products so simply CHO जो जगह थिबो ताकू COH लिखि दबो लिखि देकी आ एज यूजुअल जेम सेंदी रखिया कथा रखियो कारण लेफ्ट साइड रो किछि चेंज होबन जहा अब राइट रे गुड जगह रे चेंज होबो आ गुटे ऊपर गुटे चेंज होबो ऊपर तळे से अनुसार प्रोडक्ट एबे जदी परिबो की को एबे जदी परिबो की कहबा को चेष्टा करो नहले घरे करिवो ठीक अछि किछि असुविधा नै घरे करिकि भी रखिथिबो बेंजाइल अल्कोहल सर आमर एनुअल एग्जाम चली ओ श्रावण ठीक अच्छे किसी कथा ना एनुअल एग्जाम भी फोकस कर होमवर्क न कले चलो बर्तमान बा दरकार पड़े तुम्हें पर वीडियो गुड़ाक देखी नब ठीक अच्छे सो ये दुटा प्रोडक्ट समस्ते निजे करनब होमवर्क नेक्स्ट आम देखा होमवर्क आज देदेवा होमवर्क ना आम आउ गोटे रिएक्शन पढ़ा ये गला कैनेजर रिएक्शन नेक्स्ट आम आउ गोटे रिएक्शन देखी नबा दिस इज योर ई नंबर रिएक्शन CD है ई नंबर रिएक्शन 5 नंबर रिएक्शन बा 5 नंबर टाइप रो रिएक्शन ना सर 15 मिनट कर देबी 15 ना सर 15 मिनट ओके ठीक अच्छे रिएक्शन विथ बहुत खुशी लगुच जे श्रावणी एते डेडिकेटेडली पढ़ापढ़ी करछंती पिला माने तुम्हें भी जदि वर्ष आरंभ रो एभला डेडिकेटेडली पाठ पढ़िबो देखिबो तुमको सफलता निश्चय मिलिबो जीवन रे सफलता सेमान को मिले जो माने मु सब पिला को कहे जो माने
कॉन्स्टेंटली आउ कंसिस्टेंटली काम करती आज काम कली आउ 2 दिन काम न कले हबनी एबे मते भी से भलिया कॉन्स्टेंटली सफलता सेते बेले मिलिबो जेते बेले मु तुम मानको पढ़ी चलबी रेगुलरली ताले तुम मानको भितरे सफलता कोन आसीबो रिजल्ट आसीबो रिएक्शन विथ PCl5 सहित रिएक्शन कले कोन हबो सो aldehyde and ketone react with PCl5 aldehyde and ketone react with PCl5 to produce dichloroalkane and phosphonyl chloride प्ले माने मु बहुत दिन है क्लास स्टार्ट कले किंतु तुम्हें माने देखुच जे मात्र 7 जन ही 10 जन ही रेगुलर क्लास करछंती बा डेली रहउछंती तार अर्थ के भी हेले मॉर्निंग उठी पारु नांदी आ मॉर्निंग रे जदि हमें न उठिबार अभ्यास रखिबा डेडिकेशन आसीबो नाही लेट नाइट जाए पढ़ी भी आम बहुत पढ़ी पारे तुम्हें मॉर्निंग रे पढ़ देख बहुत फ्रेश लगे जो मैंने भी लेट नाइट रे पढ़ार अभ्यास अच्छी aldehyde and ketone react with PCl5 to produce dichloroalkane and phosphonyl chloride यार किछि मेकानिज्म नाही पिला माने तो आम देखि नवा दिस इज योर aldehyde C डबल बॉन्ड O अच्छी दिस इज योर C डबल बॉन्ड O ओके तो या सहित जो आम PCl5 को रिएक्ट करबा आम कौन प्रोडक्ट पाइबा दिस एस डबल बॉन्ड CCl ए जो डबल बॉन्ड O थिला ClCl दीटा रहिला POCl3 केमदी मन रखिबा रिएक्शन को ना एटी जो PCl5 थिला एटी 5टा क्लोरीन रु 2टा क्लोरीन दी पटे लागि गला आ जो डबल बॉन्ड थिला ए डबल बॉन्ड O आ ए PCl3 कारण 2टा क्लोरीन लागि गला से पटे PCl3 आ डबल बॉन्ड O मिसी गला सो POCl3 हे गला दिस द ट्रिक टू रिमेंबर द रिएक्शन बट दिस द नॉट द मेकानिज्म यार मेकानिज्म हम पे किछ टोटली दरकार ही नहीं सेतने मु टोटली ही कहू ना सो डाइक्लोरोअल्केन एठी आसीबो दिस इज योर डाइक्लोरोअल्केन एंड दिस इज योर फॉस्फोनिल क्लोराइड देख जने जदि aldehyde ketone आरंभ रु जदि पढ़िबो देख aldehyde ketone तुम्हें देखिबो बेसी व्यू जायनी गोटी बहुत दिन है देखिले गोटे क्लास रो मात्र 200 150 एभले व्यू जाय तार अर्थ मात्र 150 थर 150 जन पिला ही देखुछंती तो मु कहबा को चाहे जे तुमे जदि रेगुलर जिनसटा को अटेंड करिवो आउ प्रथम कथा वीडियोटा आरंभ रो प्रत्येक प्लेलिस्ट रो प्रत्येक वीडियो जदि आरंभ रो लास्ट जाय देखिवो तुमको aldehyde ketone रे सब प्रॉब्लम सॉल्व करिवार टेंडेंसी पळे आसीबो माने पाठ पढिबा सहित सब गुडा को मन भी रहि जिवो दिस द ट्रिक सो आमे गोटे कंपाउंड नबा इनिशियली फॉर्माल्डिहाइड नबा HCHO फॉर्माल्डिहाइड नेले हमर कोन आसीबो प्रोडक्ट व्हाट इज द प्रोडक्ट फर्दर ना दिस इज योर CHHClCl plus POCl3 and the name of the compound will be कोन आसीबो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड दिस इज योर SCHO सो फॉर्माल्डिहाइड को जेतबेले हमें ट्रीटमेंट करिबा we will get CH2Cl2 that is your dichloromethane the name of the compound will be dichloromethane गोटे कार्बन रही नेक्स्ट हम जीवा आउ किछि एग्जांपल दबा आ गोटे नेक्स्ट CH3CO that is एसीटोन नबा सो दिस इज एसीटोन ता सहित PCl5 सहित ट्रीटमेंट करिवा कोन आसीबा प्रोडक्ट CH3 then CCl plus POCl3 and the name of the compound will be methyl ethyl propyl so इठी कहि परिबा तुमे जदी डाइक्लोरोप्रोपेन कहबा भूल हे जिबा आंसर so this is not dichloropropane this is 1 2 3 2 डाइक्लोरोप्रोपेन नंबरिंग एठी दबा को ही पड़िबो 2 डाइक्लोरोप्रोपेन तुम्हें यदि डाइक्लोरोप्रोपेन कहबो नंबर ऑफ कार्बन को देखि देन इट विल बी रॉन्ग सो आंसर अब 2 डाइक्लोरोप्रोपेन
तो बर्तमान पे आउ किछि क्वेश्चन दे दोछि जो गुडा को होमवर्क करिवो तुमे माने ठीक अछि होमवर्क काहा को केमदी भल लागुछि जदि जो माने भल लागुछि इंटरेस्टिंग लेख आ जदि भल लागुनी नो सर इट इज बोरिंग बोरिंग लेख ट्राई टू टाइप जदि इंटरेस्टिंग लागुछि इंटरेस्टिंग लेख बोरिंग लागुछि बोरिंग लेख होमवर्क सेक्शन टा अच्छा श्रावण कहले इंटरेस्टिंग प्रेमोस श्रावणी कहले इंटरेस्टिंग शुभम भी कहले इंटरेस्टिंग अच्छा ए तीनटा ही कंपाउंड था मेकेन नेक्स्ट टाइम देखिबा आजिरो क्लास होमवर्क देखि नबा थैंक यू बहुत जना इंटरेस्टिंग कहते कि जाए बोरिंग भी कही ना पिला माने बोरिंग लगिले भी मु होमवर्क देवी ही देवी बिकॉज इट इज माय ड्यूटी टू एनहांस योर नॉलेज सो तुम नॉलेज को एनहांस करिवार अछि सेतने मु तुमे बोरिंग कहले भी देवी इंटरेस्टिंग कहले भी देवी बोरिंग कहले भी आंसर ही देवी ठीक अछि क्वेश्चन होमवर्क सो नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल ठीक अछि सो दिस इज योर CH3OH methanol methanol is oxidized using KMnO4 ठीक है we oxidize it to produce a product which upon treating with concentrated NaOH gives a compound what are the compound further CH3 CH2OH upon catalytic dehydrogenation produces a compound which upon treating with dilute NaOH will produce a compound. What is the compound? Then sir boring लगले भी समझते interesting ही कहिए yes श्रावणी right benzene plus CO plus HCl will produce a compound in presence of CuCl and AlCl3 to produce a compound which upon treating with concentrated NaOH gives a compound. What is the compound? Fourth number is dilute NaOH no ठीक अछि एटा concentrated this is concentrated NaOH further this is your toluene ठीक अछि this is toluene upon oxidation it will not give rise to wrong sorry good minute this is benzoyl chloride no CH2 COCl this is your 2-phenyl ethanoyl chloride name of the compound will be 2-phenyl ethanoyl chloride a compound na asibo 2-phenyl ethanoyl chloride okay which on reacting with H2 in presence of PDBSO4 over hot xylene will produce a compound which upon again reacting with dilute NaOH will produce a compound तो ये चारिटा रिएक्शन कंप्लीटली आल्डल कानिजार रोजेनमॉन्ड रिडक्शन को बेस करिकी हिच
So this is a alkene, that is your 2-methyl propene. 2-methyl propene upon reacting with ozone then forms an ozonide, which upon hydrolysis in presence of zinc dust will produce two compounds, which upon treating with PCl5 produces three compounds. What are the compounds? PCl5 ର presence ରେ तीनटा compound दबो, से compound गुडाक कौन. And last question, that we are getting CH. So this is your phenyl dichloromethane. No. This is your is 1 phenyl dichloromethane. 1 phenyl dichloromethane. Name of the compound is phenyl dichloromethane. Phenyl dichloromethane. जेहेतु 1 रे रहिछि नंबरिंग दबा दरकार ना. Phenyl dichloromethane. Name of the compound will be phenyl dichloromethane. Further, आमे याकू PCl5 सहित ट्रीटमेंट करबा. काहाकू PCl5 सहित ट्रीटमेंट कले एटा प्लस PuCl3 पाइबा, phosphonyl chloride, and further this is treated with CrO2Cl2 CCl4. तो काहाकू आमे इनिशियली CrO2 CCl और CCl4 सहित ट्रीटमेंट कले आमे गोटे कंपाउंड पाइबा, जहाकू PCl5 सहित ट्रीटमेंट कले आमे phenyl dichloromethane पाइबा. Okay, so this is the homework part for today's class. I hope you might have understood all the concepts. Thank you all for joining the class, and thank you. Keep sharing and please put a like if you liked the class, and do your valuable comments if you find any doubts or if you have any things. Okay, thank you.